guys, welcome back to my channel Live with Sudipta. Please come with me and let's explore another place of Dubai. So right now I am at the Kite beach. The green beach what you can see, this is the jogging track और इसके बिल्कुल right hand side में you can see a red color track. This one is cycling track. अभी हम लोग बीच की तरफ जा रहे हैं and here we can see there is a electric scooter stand as well. This beach is less crowded in compared to Jumeirah beach. I can see people are literally enjoying here with their family. They are taking sunbath. It's a good vibes. This one is Aqua Kids Park where kids can play safely. अभी धूप बहुत तेज़ है तो हम बस बीच से उठ के अंदर की तरफ आ गए हैं जस्ट टू चेक कि अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं वो एक्सप्लोर करने के लिए. वी कैन सी देयर आर लॉट्स ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड कैफेटेरियाज वेयर देयर आर वेरी गुड सिटिंग अरेंजमेंट्स आर अवेलेबल. Here we can see Dubai can is also there from where you will get the free drinking water. थोड़ा सा और आगे चल के देखते हैं और क्या क्या है. In this side we can see there are multiple shops are available. आप अगर अपना swimwear लाना भूल जाते हो so you can buy it from here like lots of dress and jewelry, bags. There are many shops for all of that. थोड़ा सा और आगे आने के बाद हमें दिखाई देगा देयर आर लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज़ एरिया, प्लेइंग एरिया फॉर किड्स, फॉर एडल्ट्स. बंजी जंपिंग चल रही है. उसके बाजू में है वॉलीबॉल प्लेइंग ग्राउंड. देन बास्केटबॉल का ग्राउंड भी है. सो गुड, इट्स अ नाइस प्लेस. अभी हम लोग फिर से बीच की तरफ जा रहे हैं. अभी बीच में जाके थोड़ी देर बैठेंगे, सनसेट एंजॉय करेंगे. Sunset at the beach with your loved one is always very special. These massive waves and stunning vivid evenings. It was just perfect. The sky broke like an egg into full sunset and the water caught fire.
इन्हें देखकर पता है कैसा मन हो रहा है, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। और इसी के साथ मेरा आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अंटिल देन, गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल लिव विथ सुदीप्ता। थैंक यू।